and welcome to this Facebook Live session. I am Dr. 𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐞𝐟𝐨𝐫 your host for today. I am a post-graduation student in Department of Oral and Maxillofacial Surgery in School of Dental Sciences. Now let's welcome our chief guest for today, Dr. Rohit Punga, a renowned craniofacial surgeon with more than 20 years of experience and head of the department in School of Dental Sciences. So now we are going live on Facebook and आज का हमारा discussion topic है facial deformities. तो सर प्लीज़ हमें आसान भाषा में बताइए what are facial deformities and ये कितने types के होते हैं? Well, facial deformities can be of different types. You can have congenital or acquired. ये या तो जन्म से हो सकती हैं और या ये ज़िंदगी के कोर्स में किसी वजह से acquire की जा सकती हैं. So facial deformities को अगर हम लोग साधारण भाषा में if you want तो साधारण भाषा में चेहरे की विकृति बोल सकते हैं. कोई भी चेहरे की विकृति जिसकी वजह से चेहरा वैसा ना अपीयर करे जो कि नियर नॉर्मल लगे. एक रेंज है नॉर्मलिटी का. नियर नॉर्मल से कोई भी चीज़ बाहर आती है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये दिस इज अ वेरिएशन और मे बी नॉट अ नॉर्मल वेरिएशन, abnormal variation or a deformity. So deformities can be of soft tissue or of hard tissue, or there can be combined deformities. So you can have deformities आपकी can start congenitally, as you know, cleft lip palate is one of the most common craniofacial anomaly. या उसकी वजह से जो genetic problems हैं उनकी वजह से और भी ऐसे birth defects होते हैं, जैसे कि hemifacial microsomia is the second one. You can have short chins, you can have short mandibles, you can have चेहरे का निचला हिस्सा जो है वो दबा हुआ रह जाता है, पूरी ग्रोथ नहीं होती ट्रिचर कॉलिन सिंड्रोम में. तो इस तरह से बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं. कभी आधे चेहरे की ग्रोथ नहीं होती, उसकी वजह से टेढ़ा हो जाता है चेहरा. ये तो कंजेनिटल डिफेक्ट्स हैं. इसके अलावा डिफेक्ट्स कैन बी अक्वायर्ड, जैसे कि किसी एक्सीडेंट की वजह से चेहरा टेढ़ा हो गया, किसी एक्सीडेंट की वजह से जिसका इलाज नहीं मिल पाया उस टाइम पे, तो उसकी वजह से हड्डियाँ गलत किस्म से जुड़ गई. what is known as post-traumatic residual deformities. And then you have also things, for example, जैसे कि आप मान लीजिए you remember recently we did that dog bite. तो old dog bite का केस है, missing part of the face है, उसको replace कर रहे हैं आप. So these are all different types of facial deformities that we can treat. इसके अलावा you can also have things like what we also get in our practice nowadays is post-ankylotic deformities. So after ankylosis of the joint, जब चेहरे का एक तरफ का joint ठीक से नहीं बना या वो फ्यूज हो गया किसी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, चोट की वजह से, तो उसकी वजह से जो आपके जॉइंट्स एक तरफ फ्यूज हो जाते हैं तो चेहरे की उस तरफ की ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाती है, रुक जाती है, तो चेहरा आगे की तरफ टेढ़ा ग्रो करने लग जाता है. तो ये कुछ टाइप्स हैं जो कि अक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज जो कि मिल सकती हैं, हाँ, जो मिलती हैं. सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा. राहुल वांट्स टू नो अबाउट कॉजेज ऑफ फेशियल डिफॉर्मिटीज, कि किस वजह से होते हैं, एंड जैसे आपने बताया कि अभी कॉन्जेनाइटल भी हो सकते हैं, एक्वायर्ड भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं. यही है मेनली जो congenital birth defects हैं वो तो can be because of use of some drugs, consanguineous marriages, and all the things which can happen before the birth of the child. Acquired में जहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं as such वो यही है कि trauma में if you go to the nearest specialist to get the face fixed properly, then preferably in ankylosis if the treatment is done at the right time, or preferably if you can avoid things like forceps deliveries, you can avoid trauma to that region, you can avoid infections को timely treat कर लीजिए जिसकी वजह से joint के अंदर कोई unnecessary fibrosis जैसी situations ना बने, inflammation वहाँ पे ना आए और वो hemoarthrosis में ना जाए. तो बेसिकली इस तरह की चीज़ें हैं जो प्रिवेंटेबल होती हैं, वो आप कर सकते हैं. बाकी ऑफ कोर्स एनिमल बाइट्स हैं जिस तरह के केसेस हम देखते हैं कभी कभी, तो वो जनरल केयर ऑफ योरसेल्फ बेसिकली टू अवॉइड द एक्वायर्ड डिफेक्ट्स. बाकी किसी भी वजह से आदमी को चोट लग सकती है. सो जिस वजह से आपको चोट लगना आप बचा सकते हैं वो सारी तरीके से अपने आप को बचा के रखिए. बाकी एवरीथिंग इज नॉट अंडर योर कंट्रोल ऑफ कोर्स, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टू टेक केयर. Okay, sir. Next question from our live session is about major problems associated with facial deformities. मतलब ये patients किस तरह के challenges face करते हैं, symptomatically, psychologically, socially? देखिए cosmetically और functionally तो है ही है, but what I consider most important is the psychological challenge, which has a very wide social implication. As a surgeon, it is our job that we somehow not just treat their faces, but treat them as human beings, as you get them to the normal way of life like anybody with a normal regular kind of face would have.
So that is the best part of the job of doing this, that you can put them back into the society with no, उनको किसी तरह का अंदर से कोई मन में मलाल नहीं रहना चाहिए कि मेरे पास चेहरा मेरा ऐसा ठीक नहीं है, वैसा मेरे में वो कमी, उनको कमी नहीं फील होनी चाहिए कोई. If you are able to do that, that is when you achieve your purpose in life. The most important thing is the psychological treatment that is required, but that cannot be achieved until unless you deliver a fantastic surgical result. Patient satisfied. Yes. So aesthetically तो दिखता ही है कि because of the aesthetic concern, everybody wants to feel good about ourselves. आपके पास even when you are regularly in the normal lifestyle. Yes, in your normal lifestyle, in your normal way of looks, you still want to enhance. You go to a parlor, you get yourself, everything is. आजकल boys and girls are equally active in enhancing their looks. So first of all, you have to come into the normal range. Exactly. So at least that part has to be done very, very judiciously. It has to be done with a sense of purpose by a surgeon. Yes, sir. It has to be done by taking into account that what are the different functional challenges. कि चेहरा आपने ठीक कर दिया लेकिन वो चलता ठीक नहीं है, जबड़ा खुले तो सीधा खुलना चाहिए, मुंह खुले तो टेढ़ा नहीं होना चाहिए. These are subtle things which probably specialists will understand. And ये चीजें अगर पब्लिक नोटिस करने लग जाए कि हाँ ये चीजें भी ठीक होनी चाहिए, तो आई थिंक अवेयरनेस इससे बढ़ जाएगी और पेशेंट्स विल बी एबल टू रिपोर्ट टू देयर सेंटर्स फॉर these treatment needs. तो इस तरह से these are most important 3 things. अगला सवाल है सर प्रिया की साइड से, डिफरेंस बिटवीन लाइफस्टाइल ऑफ दीज पेशेंट्स एंड अ नॉर्मल पर्सन. This is a very deep question actually. You see, the difference in lifestyle starts from the moment you are in the society. And the difference in lifestyle starts also from when you cannot do the things which your peers can do. जो आपके साथ के लोग हैं, अगर वो नॉर्मली खाना खा रहे हैं और आपको खाना खाने में दिक्कत है क्योंकि आपका मुंह कम खुलता है, तो कई बार the amount of psychological impact is कि कई बार छोटे बच्चे कुछ बोलते भी नहीं हैं क्योंकि बच्चों में एक प्राइड की सेंस जो होती है, वो अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी आपने पढ़ी है, सो देयर इज अ थिंग जो कि बच्चे कई बार एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है. प्रॉब्लम तो वहाँ से शुरू हो जाती है और जब तक आप इनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं करेंगे, जब तक आप इनको नियर नॉर्मल लाइफ रेंज में नहीं लेके आएंगे, तब तक वो प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी. तो नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग, नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग रेगुलरली, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू लुक, हाउ वेल यू आर एक्सेप्टेड. So if you are not accepted, suppose there is a bias which is being created against you in a room. एक कमरे के अंदर बैठ के लोग बायस करते हैं कि अरे इसके तो होंठ में ऐसा है, वो सोच भी नहीं आनी चाहिए. बिल्कुल सर. Your surgical results should be such that वो सोच भी नहीं आनी चाहिए. That is the purpose of treatment, to actually give away all that we can to prevent them from living any kind of altered lifestyle. There is one more thing that I would want to press on here is that it's also about perception. It's also about perception. आपको कोई भी पेशेंट जो फेशियल डिफॉर्मिटी के साथ मिले, as a general public, as anybody, the most important thing is to number 1 accept them that it's a treatable condition. number 1, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता. जी सर. So nobody should ever think that you should psychologically give any kind of impact to these kind of unfortunate people, because they're all treatable. You can treat the soft tissue, you can treat the hard tissue. There are certain limitations at certain places, but nobody should actually point out कि अरे इनका लाइफ ऐसा है क्योंकि ये वो है. No, that has to go away from our society. That is an important thing that I would want to say here. So next question from Akansha is, how do we detect or diagnose facial deformities, और early detection से treatment पे क्या effect पड़ता है? Early detection से treatment में ये फर्क पड़ता है कि sooner you identify and diagnose the deformity, उतना आप जल्दी intervene कर देंगे, उतना worsening of deformity को आप prevent करेंगे, because some of these deformities grow with age also. वो worsen होती हैं, जो deformity है वो और खराब दिखने लगती है जैसे जैसे एज बढ़ती है. तो अर्ली डिटेक्शन का फायदा ये है, फॉर एग्जांपल asymmetry patients you've also seen. Yes, sir. The asymmetry will be as the other side jaw keeps growing normally, asymmetry और ज़्यादा prominent होती चली जाएगी. So that is one important thing. Then diagnosis is through, of course, one is clinical diagnosis. Then the other is, of course, through impression making measurements taken with models. And now, of course, we have. Of course, CT scan is a very old modality now. But now what we can also incorporate is the STL, the stereolithographic models with CAD/CAM designing and
you can 3D print the models exactly. For example, this is a model now. Yes, now sir. this model, अगर ये किसी patient का deformed skull रहेगा तो उसकी CT images से we can make that models like we have done for few of our patients. Yes, sir. That gives us an accurate assessment of the deformity, and that ways you can actually do the model surgery before going on to the patient. So these are the advancements which are now being used regularly. At least we are using, and there are other centers in the country also which are using them regularly to deliver best of results. So diagnosis के लिए एक early identification from the peers is also important. अगर आपको दिखता है कोई कि somebody is not looking normal, तो rather than go and criticize or create a मन में कोई आप मलाल लेके आइए कि इसकी चेहरे, उससे बेटर है कि आप उसको थोड़ा गाइड कर दीजिए कि एक मोटिवेट करने के, यार डोंट वरी, ये तो हो जाएगा, I know where this can be done, why don't you get it, then preferably get them to the centers where we can treat them. So I think you should be more supportive psychologically. So that is the first way, because patient जब तक hospital पहुंचेगा नहीं तब तक हम भी accurate diagnosis कब बनाएंगे. So I think the society has a major role in helping their own friends and peers and people they identify with this thing. Now certain times I see posts on Facebook are there. People have put, this patient is looking like this, can you help them? I've seen So that's a noble way, but I don't know how good it is. The intent may be very noble, but then putting somebody's post on Facebook was also not very nice. Sometimes I feel like that, because I don't know how it impacts the psychology by doing this thing. But the noble intent is that they want to reach out. So like that, we should have the intent of reaching out and making them diagnose their problems early and get them treated accordingly. That's a great answer, sir. Next question is from Nitika. She wants to know about available treatment options. Available treatment options are many. These treatment options are not new. These treatment options have been available since probably my elders were students probably, and even that time my teachers were students. Even that time these treatment options were available. Only thing is now we are connecting well to the society to tell them, apprise them that we are here to deliver these things. Of course, there's a little specialized training which goes into being able to deliver these things, but all of that is available at least at our center here and at many other centers, of course. So the most important thing is that computer aided designing and 3D printing and virtual surgical planning. These things have actually brought about a change wherein earlier we used to treat patients with our intuitive sense with some measurements, but now in the training time, as you guys are also realizing, less is on the intuitive sense and the accurate assessment done by the surgeon. A lot of this assessment is now being shared with the computer aided planning. So even people who cannot plan them very well, that's an inherent trait sometimes. But these advancements are actually helping all surgeons now, despite their affiliations to whatever, however you may think, but at least you have a objective way of assessment now. So that is one of the good things now that we have, that we can actually have these models in our hands. You can computer base them, you can exactly see what change would create what kind of a change on the face. There are softwares available, and these are the things which are actually the newer things in the treatment. The treatment remains the same. You have hard tissue deformity corrections, you have local flaps, you have soft tissue correction done with a number of things. So that would be a very elaborate thing to elaborate on a small interaction here. But yes, there are advancements related to the CAD-CAM which is going on very well, and the virtual surgical planning which should be used. Thank you, sir, for that answer. Now, Sania wants to know about importance of awareness about facial deformities. Like, किस तरह के doctors के पास जाना चाहिए, कब जाना चाहिए? Well, as long as face is concerned, we are the specialists. So maxillofacial surgeon is the specialist for doing these kind of things. So all facial deformities, mostly we take care of, from clefts to craniofacial syndromes to post-traumatic deformities to post-ankylotic deformities to any kind of post-traumatic deformities for that purpose. So yes, you should report to a center. If you're living around the place, come to us. You're living away from us, we'll reach out to you. We've started camps for all this also now. So we are actually going into the villages also and the neighborhood areas also. We are actually trying to identify wherever जहाँ पे patients हैं जिनको पता नहीं है, हम लोग camps करके उनको भी तो we are trying to reach out. हम लोग reach out कर रहे हैं ताकि ये चीज़ जो है ये एक मतलब सिस्टम बन जाए, gradually patients को सबको पता चल जाए कि we are available for these kind of treatments. So yes, you should try to locate a center close to you who is doing facial deformities and report to them. I think remaining they will take care. Now, Dubey
का दुबे जी का क्वेश्चन है कि क्या फेशियल डिफॉर्मिटीज कम्प्लीटली ट्रीटेबल है एंड पेशेंट को किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए ट्रीटमेंट से? Very logical question, very important question also, because this is something that is क्या होता है कि यूजुअली फेशियल डिफॉर्मिटीज जो हैं ये किसी प्रोसेस की वजह से प्रेजेंट कर रही हैं, या वो अक्वायर्ड प्रोसेस है या वो कंजेनिटल प्रोसेस है। तो इनके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो कई बार सेगमेंट वाइज किए जाते हैं। जी सर। आप एक बारी में कई बार पूरी फेशियल डिफॉर्मिटी अगर ठीक नहीं कर सकते। फेस इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई लकड़ी का टुकड़ा बॉक्स नहीं है। सो यू नो देयर आर कर्वेचर्स, देयर आर कॉन्टूर्स, देयर आर सब यूनिट्स ऑफ द फेस एज यू नो। सो ये सब यूनिट्स के हिसाब से इसको करेक्ट किया जाता है, एंड वी यूजुअली डू देम in stages. Yes. We usually do the treatment of facial deformities in stages. Sometimes it is also possible to do it in a single stage in certain cases, but sometimes it's better to do it segment wise. So हर सर्जरी के बाद में कोई ना कोई आप एक्सपेक्ट करते हैं कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये होती हैं। तो लाइक सो इस सर्जरी में भी कुछ ना कुछ होती हैं कॉम्प्लिकेशंस, बट ओवर एंड ऑल बाय एंड लार्ज द रिजल्ट्स आर यूजुअली प्रोडक्टिव, द रिजल्ट्स आर यूजुअली बेटर, पीपल यूजुअली फील गुड अबाउट देमसेल्व्स आफ्टर दीज सर्जरीज। एंड ऑफ कोर्स आई विल नॉट से कि एक्सपेक्टेशन लेवल ऐसा होना चाहिए कि 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, लेकिन ये है कि अगर आज आप 33 पे फेल हो रहे हैं तो कल आप 60 पे या 75 के डिस्टिंक्शन पे पास भी हो सकते हैं। बट यस, आई वुड नॉट से दैट यू नो वी कैन मेक परफेक्ट फेसेस, बिकॉज वी आर नॉट गॉड अल्टीमेटली। भगवान का बनाया तो हम रिप्लिकेट नहीं कर सकते। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू द बेस्ट वी कैन, एंड वी यूजुअली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस usually patients feel better after the surgery, and they usually feel much better after the surgery, because आप किसी का टेढ़े चेहरे को सीधा कर दें तो आई एम श्योर वो बेटर ही फील करेगा। किसी की मिसिंग नाक अगर आप वापस लगा दें, किसी का मिसिंग कान आप रिकंस्ट्रक्ट कर दें तो वो बेटर ही फील करेगा। लेकिन अब आप मुझे कहें कि साहब जैसा इस तरफ का कान था, ये कान में मुझे लग रहा है कि ये तो 100 है और ये 80 है या 85 है, तो अब उसके लिए वी कैन समटाइम्स इन फैक्ट यू नो डू रिपीटेड स्टेज सर्जरी, समटाइम्स वी कैन डू एडजुवेंट ट्रीटमेंट्स, उसको एज क्लोज एज पॉसिबल लेके आ सकते हैं। बट 100 में से 100 यूजुअली नहीं हो पाता, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। बट यस, वी कैन गेट अ गुड डिस्टिंक्शन। बिल्कुल सर। Next question is from Nirmal. Sir, please tell us about medical advancements and technologies which are making treatment of facial deformities better than before. CBCT was a big breakthrough. Cone beam CT scan was a very big breakthrough. उसके बाद डायकॉम इमेजिंग से जो STL मॉडल्स बन रहे हैं, उसके बाद में नाउ यू नो वी आल्सो हैव पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स। सो समटाइम्स जैसे कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटीज आती हैं, यू रिमेंबर दैट पेशेंट जिनका हमने दिस एंटायर थिंग वाज शैटर्ड, सो यू कैन एक्चुअली पुट अ पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट। ये पूरा एरिया वापस जो है ये लैब में बन जाता है, और लैब में बनने के बाद में यू कैन एक्चुअली फिट दिस। So this is the way of getting 100 on 100. कि sometimes cosmetically, because this is the artificial thing that you're putting inside the patient's body. So this is the closest that we've got के computer aided designing से जो opposite side की चीज़ है उसको हम लोग models में मिरर इमेज कर लेते हैं और फिर उसको आर्टिफिशियल मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो इसके एक नुकसान ये है कि हम फॉरेन बॉडी यूज़ करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह काफ़ी हद तक टेस्टेड रहती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हो गए हैं शुरू, तो टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट्स भी किए जाते हैं, जिसमें कि आप एक तरफ का जॉइंट बिल्कुल दूसरी तरह से रिप्लेस करके दूसरी तरह का बना सकते हैं। थोड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व है इनमें। So as long as you know, I am sure the government is taking so many steps now. तो कुछ steps लेके अगर ये joints की cost भी थोड़ी reduce कर देंगे, तो I am sure there will be better outreach हो जाएगी इन joints को लेके भी population में. But this is the best that we have come close to perfection advances के साथ में, that we can do 3D printing in good quality materials which are biocompatible और वो body के अंदर safely लगाए जा सकते हैं. But usually they are reserved for more complex kind of deformities like what we had that you know in you remember that patient who had shattered this that one. So lastly हमारी audience को आप कुछ बोलना चाहेंगे about society acceptance and inclusion for these patients? That I said initially, is very close to my heart because this is the main reason that I operate very sincerely. Yes, you sometimes you know you work for money, you work for position, sometimes you work only for one thing, that is satisfaction. बिल्कुल sir. This is one job which gives you 100% satisfaction rate, because whenever you make the face a little better, it is a different level feeling altogether. So I just want to share this feeling with everybody who is even not a surgeon. कि अगर आप भी उन पेशेंट्स को किसी तरह से ऐसे हेल्प करते हैं कि आप उनको सही सेंटर पे रेफर कर दें, आप उनको सही जगह पे पहुंचा दें और आप उनका मनोबल बढ़ाएं, यू नो उनके खिलाफ कोई बायस ना रखें, तो आई थिंक आप भी एक अच्छा सेटिस्फैक्शन लेवल महसूस करेंगे। क्योंकि सर्जन तो सिर्फ सर्जरी कर रहा है,
जो बाकी लोग हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी का टू हेल्प ईच अदर. So as long as we keep helping each other, I think that's a long way to go as a society also. So that is one thing, that society acceptance and inclusion has to be there, because they are not harming anybody. बिल्कुल सर. वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं. उनका नुकसान किसी वजह से हुआ है, या कंजेनिटली हुआ है, या acquired किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, तो उनको नियर नॉर्मल लाने के लिए I would request all members of the society to please help them and contribute to get them referred to the right center so that we can help them out. That was a great answer, sir. Thank you so much. और यहाँ हम अपना Facebook लाइव सेशन एंड करते हैं. Thank you. Thank you. Thank you, sir.